हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दुष्यंत किचन। अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट या कैफेज में जाते हैं तो काफ़ी बार हम उसे ऑर्डर करते हैं। तो आज की रेसिपी कुछ ऐसी है जो कि है पोटैटो वेजेस। तो इसे बनाने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बनाएंगे रेस्टोरेंट एंड कैफे स्टाइल पोटैटो वेजेस। तो जानते हैं इसे बनाना कैसे। तो जो आलू हमने ठंडे पानी में भिगो कर रख दिए थे, अब हम उसे इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसे तेल में डालेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूँ ऐसी ही रेस्टोरेंट एंड कैफे स्टाइल रेसिपीज जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।